Morning, aspirants. So today we're gonna talk a little about complex numbers and take few questions, maybe one or two, related with the Argand diagram style of handling complex numbers. Okay. So first of all, when I talk about complex number, let me see. In fact, in my class, I found out that students were a little sort of lost when it came to understanding the real meaning of complex numbers. So let's see, if I give you z1 is equal to 2 plus 3i, okay, and then we have z2 जो कि है मेरा -4 -i, और मैं पूछूंगा आपसे which one is greater, z1 is greater than z2, कि z2 is greater than z1, what is the status of their, greatness, I should say. कौन बड़ा है, z1 बड़ा है या z2 बड़ा है? So I found that in my class many of the students were kind of a little lost when it came to understanding complex numbers to this extent. तो यहाँ भी मुझे लगता है कि मतलब रोशनी डालनी चाहिए, कौन बड़ा है, z1 बड़ा है, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो अगर हम प्लॉट करें अपने z1 और z2 को, तो 2 plus 3i, right? So your z1 will be somewhere around here, right? और z2 को प्लॉट करते हैं तो कहाँ हम लाई करेंगे? राइट, सो ये रहा हमारा z2। अब बताइए z1 बड़ा है या z2 बड़ा है? तो बहुत बच्चों को लगा कि शायद z2 बड़ा है, कुछ बच्चों को लगा नहीं z1 बड़ा है। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ना z1 बड़ा है ना z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। बोथ आर जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोटिंग पॉइंट्स ऑन द आर्कन डायग्राम। अब मैं बोलूंगा ये पॉइंट बड़ा है या ये पॉइंट बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? दोनों जस्ट पॉइंट्स हैं, इसमें बड़ा छोटे का क्वेश्चन ही अराइज नहीं करता। देयर शुडंट बी एनी डिस्कशन अबाउट द लार्जनेस और ग्रेटनेस ऑफ these 2 points. These are just 2 points in space, that's it. तो z1 और z2 में बड़ा छोटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। हाँ, यहाँ ट्विस्ट हो सकता है अगर मैं बोलूं कि मॉड z1 बड़ा है या मॉड z2 बड़ा है। Now the situation has changed. When I have given you mod z1 and mod z2, then you know mod z1 is nothing but the length of this line, and mod z2 is nothing but the length of this line. Correct? अब आप बोल सकती हैं कि mod z2 जो है will be more than mod z1. Clear about the concept of complex numbers? ये just imaginary numbers हैं on an imaginary plane, Argand diagram, Cartesian system, whatever you like to call it, but there is no comparison between the size of 2 points unless until you put mod symbol. When I talk about mod, that means I'm talking about the length of this vector, you can say, or you can say the magnitude of this vector z1 and z2. In that case, mod z2 will be greater than z1. Okay, so with this fresh understanding of complex numbers, let's see if we can handle few tricky questions. Okay, so the first question is asking us to find out the locus of z such that it satisfies this question and this condition. Okay, क्या करना है हमें? locus of z find करना है. Locus of z is what we are supposed to find. तो हमें क्या सिचुएशन दिया हुआ है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए। फर्स्ट फॉर्म क्या है, उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम।
कार्टेशियन सिस्टम जिसमें हम लोग सिंपल क्या यूज करते हैं, x प्लस माइनस आई वाई का फॉर्म, यहाँ भी प्लस माइनस आप लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, यू मस्ट हैव स्टडीड, सो क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब क्या हो गया कि z को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं किस फॉर्म में, r cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, r कैपिटल C I S। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, r जो कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, r इज नथिंग बट मॉड z, और ब्रैकेट में यू कैन राइट cos थीटा plus I sin theta. Depending upon the principal argument theta, this sign plus will vary over here. Okay, the third form is Euler's form. Euler form में हम लोग क्या करते हैं, z को हम लोग यही r cos theta plus I sin theta, इसको we can simply write as r e to the power of I theta. e क्या है, ये मैथमेटिकल सिंबल है, यूलर्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू समवेयर अराउंड 2.718 ऐसा कुछ होता है, but this is the form Euler developed for expressing complex number, and it's very useful while solving many of the questions of complex number, especially JEE oriented questions. Okay, and the fourth form is your vector form, जिसमें हम लोग complex number को as a vector treat करते हैं. Okay, just like we used to do vectors in physics. वेक्टर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली एज वेक्टर्स ही ट्रीट करते हैं। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेयर द सिचुएशन इज आर्गुमेंट ऑफ z minus 4 is equal to 5/4, locus of z फाइंड आउट करना है। यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्म्स, बट ओवर हियर आई वुड लाइक टू डिस्प्ले हाउ वेक्टर फॉर्म turns out to be the most efficient way of handling this kind of question. Okay, so चलिए स्पेस में कोई एक पॉइंट है z एक पॉइंट, एक वेक्टर है हमारा, कौन सा वेक्टर है, z। दूसरा वेक्टर क्या है, 4 एक वेक्टर है, 4 भी एक वेक्टर हो सकता है। उसको कैसे दिखाइएगा आप, प्लेन कार्टेशियन सिस्टम या प्लेन पे 4 वेक्टर हुआ मेरा 1 2 3 4, सो माय 4 वेक्टर विल बी, यहाँ से यहाँ मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, और मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ एरो दे देता हूँ, सो कि आपको लगे वेक्टर वाला फील आए, राइट। सो दिस इज 4 वेक्टर, और एक z वेक्टर है स्पेस में कहीं इस तरह से कि ये दोनों वेक्टर का जब आप रिलेटिव ले रहे हैं, रिलेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू 4 वेक्टर, तो वो जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़े थे, याद है, जैसे मान लो a वेक्टर इधर है, ओके, and you have a b vector over here. When I say what is a minus b vector, that means I'm asking you to find out the relative vector of a with respect to b. Then how did you sketch it? Can you recall? This was your a minus b vector, correct? a minus b vector. इसी में आपसे कोई पूछ दे b minus a vector क्या है, तो all you need to do is let the vector as it is, only change the sign. This sign will show b minus a vector, correct? कोई आपसे पूछे ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट आप क्या कीजिएगा, ऐसा एक पैरेललोग्राम बना लीजिएगा। रिजल्टेंट मीन्स a plus b vector, and this will be your a plus b vector. These are the simple vector basics which we have studied in our physics classes. तो चलिए यहाँ हमें तो फाइंड आउट करना है z minus 4 वेक्टर। तो z कहाँ लिया जाए, z सपोज करो आप यहाँ ले रहे हो, अब मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ, देयर कैन बी umpteen questions, why सर आप यहाँ पे क्यों चूज कर रहे हैं, इधर क्यों नहीं चूज कर रहे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। you'll appreciate
my choice in the next batch of few seconds. Let's see. So I am selecting my z vector somewhere around here, over here. ओके, सो अब देखते हैं हमारा z वेक्टर कैसा होगा. ये हो जाएगा हमारा z वेक्टर, राइट. और अब आपको फाइंड आउट करना है z-4 वेक्टर. Okay, this is what you need to find out, z-4 vector. That means the relative vector showing the position of z with respect to vector 4. So this is my z vector and this is my 4 vector, and my z-4 vector will give me this. I hope my drawing is somewhat clear. Okay, so this is my z-4 vector. Okay, and argument has been given as pi/4. That means ये वेक्टर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना दिया हुआ है, pi/4. यानी this angle is how much, 45 degrees. Okay, so now what you need to do, you need to extend this to determine the locus of z. You need to actually extend it. Wrong choice of color. So I'm gonna use this color and I'm gonna dim the thickness of line for your better understanding. Okay, and I'm extending it further this up, and I'm completing my axis like this. So this is what z-4 vector is representing over here. Now can you tell me the locus of z? Z will be any point which will lie on this straight line having a slope of 45 degrees, because any point on this straight line will satisfy the condition that z vector, say if you have chosen this point, then your z vector will be this. Sorry, in that case your z vector will be this, right? And z-4 vector will automatically will be a part of this straight line having a slope of 45 degrees. So straightforward, you can say that the locus of z is nothing but a straight line, correct, having an intercept of -4 on y-axis, correct, since it's 45 degrees. So if this is 4, this is also supposed to be 4, right? Isosceles right angle triangle. So the locus of z is a straight line having an intercept of -4 units on the negative y-axis and having a slope of how much, 45 degrees. That is your slope. That means tan 45 is your slope. So you can simply write y is equal to x minus 4 is the locus of z, straight line. I hope the question, this pretty tricky question, is now clear to you, and we have used this form of expression for our complex number to handle this question. You can in fact use any of the forms available out of the 4 forms which we know about complex number to handle this kind of question, but I insist that you use vector form when you are handling this kind of question, because it will be time saving and much more efficient. Okay, thank you for your time. I hope you like this approach. Please press the like and subscribe button and also press the bell icon. See you next time. Thank you.